Hello my dear students, in previous lecture video I already explained what do you mean by angle, then the interior and exterior of an angle. After that I explained adjacent angle. How we can say the angles, whatever the angles given, that it should be adjacent because of three reasons. What is the first reason? It should be have a common vertex. Okay, then second is a common half, and the third one is the separate interior angle. Then only we can see that the adjacent, whatever the angles is given, that should be a adjacent angle, means that will be adjacent angle. Okay, so now in this lecture I'm going to explain what do you mean by complementary angle. Let us see this figure. What is given to you? Draw angle PQR, a right angle. Means in this what you have to do, firstly you have to draw a right angle. You know right angle means perfect 90-degree angle we have to draw. Like this way angle you have to draw, the angle should be a 90 degree. So name them angle, angle P, angle Q and angle R. Over. Now what they are tell you, take any point S in its interior. Interior means अंदर, एंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट S दे दो, लिख लिया. देन ड्रॉ रे क्यू एस. रे मीन्स यू नो, ओके, एक पॉइंट होता है और एक लाइन जो कि तो कैसे मूव होता है, इनडेफिनेटली मूव डाउन. सेम केस आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट एस को क्रॉस करे. ओके, then add the measure of the angles, whatever the two angles, like this way two angles it form, right student? So this measure you have to measure by using the protractor. Okay, so what will be the sum of the measure? अब इस एंगल का सम निकालना, मीन्स एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, what should be that you have to find. Okay, सो इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दोनों में का, अगर ये दोनों का सम अगर हमको कितना मिलता है, अगर 90 डिग्री मिलता है, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वो कैसे एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसका सम ऑफ द मेजर मीन्स दोनों का ऐड करते हुए जो भी एंगल, दो एंगल रहेगा उसको जब हम सम करेंगे तब मेजर आपको 90 डिग्री मिलेगा. सो दैट एंगल वी हैव टू से दैट दैट एंगल शुड बी अ व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. उस एंगल्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, हियर एंगल पी क्यू एस एंड एंगल एस क्यू आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. Now let us see next page. Just like examples is given, observe the angle in the figure and enter the proper number in the box. So you can see the figure. What is there? Angle ABC is there 40 degree, and इसका measurement of angle ABC how much is given? 40. So this 40 you have to write here. Over. Then what is given to you? Angle PQR is equal to 50 डिग्री. मतलब measurement of angle PQR कितना दिया हुआ है आपको? 50 डिग्री है. Now what you have to do? Addition of these two angle. Add these two angle. 40 plus 50 how much? 40 plus 50 is equal to how much degree? 90 degree. Okay, means it means that the sum of the measure of angle ABC or angle PQR is how much degree? 90 degree. Therefore they are complementary. Understood? If the measure of the two angle 90 degree is given, it means that what? Whatever the angle is given, whatever the angles is given, that will be the complementary angle. Right students? Now let us solve one example from your textbook. What is the question? Find the measure of the complementary of an angle of measure 70 degree. Means एक एंगल का मेजर आपको 70 डिग्री दिया है, आपको complementary angle find करना है. The measure of an complementary angle. So what you have to find? We have to write let comma the measure of the complementary, because we have to find the complementary angle now, so we have to write the let the measure of the complementary angle bx. This sentence you have to write compulsory. Okay, means what I wrote here, let the measure of complementary angle को हमने x दिया, तो हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो सम ऑफ द मेजर, सम मीन्स एडिशन ऑफ टू एंगल. सो वन एंगल यू हैव टू फाइंड एंड वन एंगल ऑलरेडी गिवन टू यू 70 डिग्री. तो क्या वन एंगल को हम क्या करेंगे? एक एंगल 70 लिखेंगे जो कि आपको गिवन है, प्लस एक एंगल को हमने क्या लिया? x लिया है ना. तो x is equal to, and we know complementary angle is how much? 90 degree. Like this way equation you have to make.
one angle already given to you, and then you have to find the next angle. And measurement of complementary angle, you know that what is the complementary angle is addition of the two complement sum of the measure of the two angle is how much degree, 90 degree. Now you have to solve this, means you have to find the value of x. तो हमें क्या करना है, subtracting addition है, so we have to do the subtracting both the by 70, means x plus minus 70, इसको subtract करो, so 90 minus 70 means हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, subtracting both side by what, 70 degree. Okay, so 70 and 70 cancel, so what is the answer coming, x is equal to 90 minus 70 is how much degree, 20 degree. Okay, this is the measurement of other angle. So what you will write, therefore the measure of the complement of an angle of an measure 70 degree is how much degree, 20 degree. Have you understood? So students, let us take the second example of your textbook. Questions. Angle of measures a plus 15 degree and 2a degree are complementary. What is the measure of each angle? Now we have to find the measure of each angle. So we know that we have to write, we know what the sum of the measures. This sentence you have to write always, the sum of the measure of the complementary angle is how much degree, 90 degree. Okay, so already the angles of measurements, two angles are already given to you, so we have to take the addition of these two angles equal to how much degree, 90 degree. So what is the first angle, a plus 15. Okay, 1 plus 2a equal to how much degree, we have to write, 90 degree. Now do the addition, a plus 15, open the bracket and write now, equal to 90. ठीक है, अब now see variables are same, so together you have to bring the variables, means variables को एक साथ लिखो. तो यहाँ पे 1a है, 2a plus 1a how much, 3a plus 15 equal to 90 degree. Okay, now what you have to do, we have to find the value of a, so plus 15 is there, so both the side we have to do, yes, subtracting both the side minus 15. So 3a plus 15 minus 15 equal to 90 minus 15. This we have to write the reason, subtracting 15 both the sides, right? So 15 cancel, what remain, 3a is equal to 19 minus 15. If you don't know, like this way also you have to do the subtraction. 10 में से 5 गया तो 5, here 8 में से 1 गया तो कितना, 75. तो कितना बचा यहाँ पे, 75. नाउ आई एम राइटिंग दिस साइड. ओके, तो क्या बचा, therefore 3a is equal to 70. If like this equation is coming, so what you have to do, in between 3 and a multiplication है, क्या है इन दोनों के बीच में, multiplication है. तो हमको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ द साइड. अब जब ये 3 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो बेटर वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड बाय 3, राइट. इफ़ यू आर गोइंग टू डिवाइड बोथ द साइड बाय 3 तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो वॉट विल रिमेन, a इज इक्वल टू, अब वी हैव टू डिवाइड 3 by 75. इफ़ यू डोंट नो यू कैन डू लाइक दिस, 75, 3 2 6, 15. सो क्या आएगा, 3 5 15. सो व्हाट इज द आंसर इज कमिंग, 25. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. नाउ already we get the value of a, but we have to find the accurate measure of the angles, what both the two angles are given, that we have to find the accurate measure. So एक एंगल कितना है, a plus 15 का, और सेकेंड 2 है. इट मीन्स दैट a की वैल्यू निकल गई, तो हमें क्या लिखेंगे, a plus 15 मीन्स 25 plus 15. तो ये कितना होगा, 25 plus 15, सो 0 2 3 40 डिग्री. एक एंगल 40 डिग्री और दूसरा 2a है, तो 2 into 25 means how much degree, 50 degree, right student? So what is the last answer you have to write, yes. So what is the measure of each angle, so what you will write, 40 degree and 50 degree are required angles. Have you understood? Like this way again I am going to repeat. क्वेश्चन में दो एंगल्स दिए हुए
और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मीन्स उन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग को क्या लिखना है, a + 15 डिग्री + 2a डिग्री = 90 डिग्री। दोनों का ऐड कर लो तो कितना मिला 3a + 15 = 90 डिग्री। सो इफ़ यू हैव टू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जो +15 है उसको सब्ट्रैक्ट करो बोथ द साइड से, तो 15 कैंसिल हो जाए तो व्हाट रिमेन 3a = 75। अब ये मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म है तो हमें क्या करो, थ्रू को डिवाइड करो। सो व्हाट विल बी a = 25। बट ये जो a की वैल्यू है, बट हमारा एंगल क्या है a + 15 और दूसरा एंगल है 2a। तो a + 15 का क्या आएगा 25 + 15। पुट द वैल्यू ऑफ a 25 + 15 = 40 डिग्री और 2a क्या आएगा 2 × 25 डिग्री 50 डिग्री। तो दोनों एंगल्स क्या होगा 40 डिग्री और 50 डिग्री आर रिक्वायर्ड एंगल्स। थैंक यू।